Hello friends, today we are going to start with the topic national income. It is a very important topic. Kindly go through all the videos according to number, so that you will be able to understand each and every point very clearly. First of all, starting before national income, let me discuss the related aggregates towards it. The first point is domestic territory. Let us understand what is domestic territory. It means the political frontiers or a body or a borders of a country in or outside the country. That means where the goods and services are easily or freely transferable. Let me take an example over here. For example, Air India. Air India is an Indian based company. If it is traveling abroad, the territory of that particular company is India only. If it is traveling from India to US, the revenue generated from that particular event will be part of the national income of India. And side by side, if the Air India is traveling between Malaysia and Bangkok, still the revenue generated from that particular event will also be involved in the national income of India, because the Air India is an Indian based company. So, moving towards the next point, that is normal residents. It refers to an individual or any institution who ordinarily resides in a country for the period of more than 1 year. But here we need to see one further point, whose center of economic interest lies also in that particular country. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जो इंडिया में रहता है, खाता पीता वहीं है, कमाता भी वहीं है, स्पेंडिंग भी वहीं कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स भी वहीं कर रहा है, प्रॉफिट्स भी वहीं से जनरेट कर रहा है, ही दैट पर्सन इज ए नॉर्मल रेजिडेंट. अगर WHO का ऑफिस या UNO का ऑफिस इंडिया में है, we will not include them as the normal residents. That means the people who are running that particular organization are not part of normal residents of India. But जो Indian embassy US में है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, whatsoever, जो revenues वो वहाँ generate कर रहे हैं, they are normal residents, because क्योंकि उनका जो center of economic interest है, that lies in India. Now the third point is citizen. Citizen, this involves who is the citizen of any particular country. The person who takes birth in that particular country or by some legal provision. If I am an Indian, I am born over here, so I am a citizen of India. But if I want to shift to Canada, I am not born over there, so through some legal provisions I will be able to take the citizenship of Canada. The next point further is factor income and transfer income. Factor income is income earned by rendering some factor services, जिसे आसान में बोलें मेहनत का पैसा, by giving some productive services. जो पैसा उससे कमाया जाता है उसको फैक्टर इनकम बोला जाता है. दिस फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. While we are calculating national income, factor income is only included. For example, wages, salary, interest, profits. The next point is transfer income. Transfer income is the income which is earned without rendering any productive services. For example, gifts, race, lottery. This income is not at all part of national income. The next point is final goods and intermediate goods. Final goods, the name itself defines, it is ready for final consumption. But the intermediate goods are the goods which need further processing. They are raw material. For example, sugar. Sugar is the final good for a farmer, but for a miller, it is not a final good, it is a raw material.
So, if we take an example of furniture, furniture is a final good. It does not need any further processing, ready for final consumption by any consumer. Final goods. National income only involves final goods, not intermediate goods, because that leads to double counting, which will not give the actual amount. Let me take one example over here. The intermediate goods, if not consumed in one particular year, after 365 days, it will be included in final goods. If I have 10 stools and I have sold that 7 out of it, the rest 3 will be included in final goods after 1 year if I am unable to sell that particular product in 1 year. And one another example I want to take over here is for sugar. Sugar is a final good for us if I am consuming a sugar. But for a baker, it is a raw material. So it is an intermediate good for the baker. So one thing is need to mention over here is the product is used according to the nature of its use. So accordingly it has to be taken in calculation of national income. Gross value and net value. Gross value is the purchasing value, on what value I have purchased the particular product. The net value is the actual value. Make this point clear over here with an example. Like if I have a Samsung phone 16 GB, I bought it today for rupees 20,000. After few months, I want to sell it off, I want to buy a new phone. So if I go to market and will ask for the new price, the net price, it comes out to be a 15,000 rupees. So after a few months, what happened to that particular price? The 5,000 rupees is depreciation for using that phone. Depreciation is simple. It means continuous reduction on the value of fixed asset. That's it. That is a depreciation. So 20,000 rupees is gross value. 15,000 rupees is net value. So if I deduct gross and net, the results is 5,000 rupees. That is depreciation. The next is factor cost and market price. किसी भी चीज को बनने में जो खर्चा आएगा, that is factor cost, which means cost of production. And what is market price? कितने में वो चीज हमने बेची, that means a sale price. So if you have to go to if you have to calculate factor cost from market price, the differentiation will be net indirect tax. Let me take an example over here. If I have bought a pen of rupees 10 rupees pen I have bought, the cost of production of that particular pen is rupees 10 and the selling price of that pen is rupees 13. The difference of cost of production and selling price is rupees 3. National income concept includes net indirect taxes. They does not involve profits. So the indirect tax is rupees 3. So if I have to calculate net indirect taxes, I will deduct subsidies from indirect tax. So NIT means net indirect taxes is equals to indirect taxes minus subsidies. Subsidies are if government is providing any benefits to any company for producing the goods. So these subsidies are to be deducted from indirect taxes. Friends, आगे हम ये देख रहे हैं ग्रॉस एंड नेट. जब हमने ग्रॉस से नेट में जाना है तो वी विल बी डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन. सेकेंड इज वी हैव अर्लियर ऑल्सो डन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस. अगर हमारे पास मार्केट प्राइस की वैल्यू है एंड वी हैव टू go to the factor cost, we will be deducting net indirect taxes. Net indirect taxes is equals to indirect taxes minus subsidies. जब net आएगा, net का मतलब है
कुछ ना कुछ डेफिनेटली उसमें पहले माइनस होएगा, ओनली देन वी विल बी रीचिंग टू नेट, विच मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। द थर्ड पॉइंट इज डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम इज देश के अंदर रहने वालों ने कितना पैसा कमाया, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम and the other is national income. National income includes domestic income plus net factor income from abroad. Friends, let me remind you, यहाँ पे भी net factor income from abroad है। अगर यहाँ पे net है, that means factor income में से कुछ ना कुछ डिडक्ट हुआ है। Let us understand one thing, हमारे देश में 100 रुपये कमाया, 20 रुपीज़ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, सो हमारी नेशनल इनकम कितनी हुई, डोमेस्टिक इनकम 100 रुपीज़, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20 रुपीज़ एंड द नेशनल इनकम इज 120 रुपीज़। ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये वो पैसा है जो लोग बाहर, इंडिया से बाहर रहते हैं, बट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। Net factor income from abroad is factor income received from abroad minus factor income paid to abroad. So अगर हमने डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें एडिशन कर देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज, कैसे कमाई जाती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? जो एम्प्लॉयज़ ने वहाँ से कंपनी से कंपनसेशन लिया, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, या कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची, या बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस का प्रॉफिट आया। द थर्ड पॉइंट इज इनकम फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स आर सेविंग्स, जो उन्होंने सेव किया। फ्रेंड्स, अब हमने जो फॉर्मूलाज कर लिए हैं, जो न्यूमेरिकल्स में आगे काम आने वाले हैं, लेट मी डिस्कस, उसको मैं फटाफट से एक रिवाइंड दे देती हूँ। अगर हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अवेलेबल है, हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज डोमेस्टिक इनकम। ग्रॉस से नेट में जाएंगे, डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देंगे, डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एडिशन कर देंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वी विल बी डिडक्टिंग। फ्रेंड्स, जब हमने डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करना है, दिस द नेक्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज फॉर न्यूमेरिकल्स ओनली। डोमेस्टिक इनकम includes income from domestic product occurring to private sector, income from domestic product occurring to public sector. Domestic income is net domestic product at factor cost. हमने एडिशन करना है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर का लेना है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू पब्लिक सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में अनदर 2 बाइफर्केशंस हैं जिसको हमने समझना है, दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सेकेंड इज सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। ये जब आपको न्यूमेरिकल आएगा एंड यू जस्ट हैव टू डू एडिशंस। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइवेट इनकम। जब हमने प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करनी है, दैट इज इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, इसका अमाउंट हमने लेना है। नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स इंडिया को छोड़ के बाहर से जो भी पैसा आया, दैट विल बी द पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम। द थर्ड इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सिंपली हमें प्राइवेट इनकम में इंक्लूड कर देना है। फोर्थ पॉइंट इज नेशनल डेट इंटरेस्ट, मीन्स अगर किसी प्राइवेट सेक्टर ने सरकार को लोन दिया, गवर्नमेंट को लोन दिया, दैट इंटरेस्ट विल बी द पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम, क्योंकि वो इनकम प्राइवेट सेक्टर की हो रही है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट मीन्स एनी गिफ्ट और सब्सिडी अगर सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को दी है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम। देन फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स, there is one more point, that is personal disposable income. Personal disposable income is the income available at one's disposal. The personal disposable income includes the personal income of a person,
minus personal taxes minus miscellaneous receipts of the government. Let me make one point clear over here is the disposable income. This is the topic which is separated, will be the part of the chapter. The personal income is simple, the personal income you are earning from any company, you are earning a salary. So on that salary, if you are paying some taxes, these are your personal taxes. The next is miscellaneous receipts of the government. If you are paying any miscellaneous taxes to the government, that will be deducted from your personal income. The next part is personal income. Also, let me discuss one point is personal disposable income can also be calculated personal consumption plus personal savings. This I am telling you two formulas because अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, जो जो आपको न्यूमेरिकल्स में अवेलेबल है उस अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. पर्सनल कंजम्पशन प्लस पर्सनल सेविंग्स इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. मूविंग फर्दर इज पर्सनल इनकम. What is personal income? It is the part of private income received by household. Personal income involves private income minus corporate taxes. That means if I am working in any company, the income I am receiving over there minus the corporate tax minus the retained earnings, that are savings. Any undistributed profits that will be deducted from private income. So, if you have to calculate personal income, private income minus corporate taxes minus retained earnings. So, you will be coming to the point personal income. Friends, in this video, I have covered the related aggregates to national income. If you liked my video, please share with your friends, subscribe the channel and click the bell icon for the more updates. And in the next video, I will be covering the methods to calculate national income. Thank you so much.